Welcome to our YouTube series in which we are solving previous year questions from 1979 to 2024. Here, today, we'll take the topic Directive Principles of State Policy. It is our third video related to Directive Principles. For previous video, you can refer to earlier video playlist. So let's start. Start करते हैं. पहला क्वेश्चन देखते हैं. Directive Principles of State Policy has been given precedence over fundamental rights in the dash constitutional amendment. ये क्वेश्चन 1986 में पूछा गया था. Now answer is 42nd Constitutional Amendment Act. कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ फैक्ट्स जानना बहुत जरूरी है आपके अगर आपको DPSP से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, पार्ट 4 of the Indian Constitution contains directive principles of state policy. First point. Second point, it consists of liberal intellectual principles, socialist principles, and Gandhian principles. Third, it is non-enforceable or non-justiciable in a court of law. कुछ points आपको याद रखने जरूरी है. And one more thing कि directive principles has been given precedence over the fundamental rights in the 42nd Constitutional Amendment Act. Why? To ensure that there is fulfillment of Article 39B and C. अब ये आर्टिकल 39B and C को प्रेसिडेंस दिया गया है ओवर फंडामेंटल राइट्स. नाउ व्हाई दिस आर्टिकल 39B and C आर इंपॉर्टेंट, लेट्स सी. आर्टिकल 39B कहता है कि ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वे दैट बेनिफिट्स कॉमन गुड. इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. एंड आर्टिकल 39 सब क्लॉज C talks about economic systems should not lead to concentration of wealth. See, during earlier time there was a prerogative of state to implement land reforms. और land reforms को implement करने के लिए right to property violate हो रहा था, तो उसको काउंटर करने के लिए स्टेट ने प्रेसिडेंस दिया DPSP को कि भाई अगर मैं DPSP जो कि बेनिफिट करे कॉमन गुड को, अगर मैं उसको स्टेट इम्प्लीमेंट करना चाह रही है तो फंडामेंटल राइट को वायलेशन नहीं माना जाएगा. Thus, 42nd Constitutional Amendment Act gave precedence to DPSP over fundamental rights. Now move to next question. Answer here is B, 42nd. ठीक है, इतना याद कर लोगे. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस DPSP रिलेटेड आपके इजीली बनेंगे. नाउ सेकंड क्वेश्चन, DPSP आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अभी हमने देखा पार्ट 4 है ना, इजी, वेरी इजी. पार्ट 1 इज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, सेकंड इज पार्ट 2 इज सिटीजनशिप, Part 3 is fundamental rights. Now question number 3. The concept of welfare state is included in the Constitution of India in. The concept of welfare state कहाँ included है? Directive principles of state policy में included है. और there is a note for you that UPSC can ask further कि Article 38 में there is a mention about the concept of welfare state. है ना? तो just take a note that Article 38 talks about concept of welfare state. ये आपके upcoming prelims से पूछ सकता है. Just remember that. ठीक है? अगर इतना कर लिया तो बहुत easily आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं DPSP रिलेटेड. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. DPSP आर कंटेन्ड इन डैश. देखो ये पूरा रिपीटेड क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन पूछता था UPSC पहले, अभी भी हलवा ही पूछता है, लेकिन एग्जाम प्रेशर में बहुत लोग गलती कर देते हैं. तो इफ यू हैव मास्टर्ड ओवर PYQs from 1979, you are in a better condition to solve more than 95% of the questions on polity, है ना, और इजीली निकल भी जाता है. फाइन. तो DPSP आर कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो रिपीट किया है क्वेश्चन. We'll see कैसे बार बार PYQ रिपीट करता है UPSC. Now, question number 5. Which amendment of the Constitution gave priority to directive principles over fundamental rights? फिर हलवा क्वेश्चन 1981 में है ना, 1986 में भी पूछा था. हम लोग उल्टा जा रहे हैं, राइट. तो 81 ने पहले पूछा, उसके बाद 1986 में भी पूछ रहा है. ठीक है, आई थिंक इट्स नॉट विजिबल, तो आई एम जस्ट शोइंग हियर. 1981 में पूछ रहा है, उसके बाद 1986 में इट हैज आस्क्ड UPSC. देख रहे हो कितना PYQ चेंज होता है. द आंसर हियर इज 42nd Constitutional Amendment Act, D. The 42nd Amendment Act gave primacy to directive principles, stating that no law implementing any of the directive principles could be declared unconstitutional on the grounds that it violated any of the fundamental rights. Fine. Now some pro mentor tip for you regarding directive principles, that DPSP तो पढ़ना है, no doubt you should remember DPSP, but there are some important DPSP, उसको अच्छे से पढ़ना है. For example, Article 37 which talks about characteristics of directive principle, that it is fundamental in the governance of country. Article 38 and 39 which talks about economic and social justice, कि भाई eliminating inequalities in status, income, equal pay for equal way, which contained in Article 39D. Then Article 50 है ना, talks about separation of power between judiciary and executive. And lastly, Article 51 which talks about promoting international relations. This is your first pro mentor tip. Second, DPSP from 42nd Constitutional Amendment Act 1976 and 44th Constitutional Amendment Act 1978. यहाँ जो ऐड हुए हैं, यहाँ 4 ऐड हुए हैं, यहाँ 1 ऐड हुआ है, इसको आपको पढ़ना है. स्पेशल फोकस शुड बी ऑन गांधी एंड DPSP, UPSC का फेवरेट है, बार बार पूछता है ना. एंड स्पेशल फोकस ऑल्सो ऑन लिबरल इंटेलेक्चुअल DPSP, लाइक UCC इज इन न्यूज यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट डील्स विद आर्टिकल 44, राइट. इतना पता होना चाहिए. अगर इतना कर लिया तो यू कैन ईजिली सॉल्व DPSP के क्वेश्चन. हलवा है, ठीक है. तो थैंक यू एवरीवन.
right? Stay tuned for further videos. I hope you like our series.